फ्रेंड्स वेलकम टू आवर टीकेस जनरल स्टडीज आई होप आपण माने भलो थिबे देखंतु आज हम माने कोन करबा इकोनॉमी एंड जीडीपी बेसिस रिलेटेड किछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा जहा कि आपण माने पर एग्जाम रे हेल्प आसीबा आपण माने जदि चाहउछंती एई परिबा बारे क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करबाकू तले डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मध्य करि परिबे ठीक अछि चलंतु आज रो प्रथम क्वेश्चन देखिबा हमर प्रथम क्वेश्चन हेउछि देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट in India is correct at total fertility rate कहले कोन होटे ए देखंतु it refers to the average number of children born for 1000 women in a year देखंतु हमर वर्ष को हमर 1000 women को मध्य रे सेमानकर जो चाइल्ड व चिल्ड्रन born हेउचनि सेमानकर एवरेज एंड बी देखंतु India has achieved replacement level fertility as per NFHA is 5 and C देखंतु a TFR 3.1 is considered replacement level fertility and D देखो TFR has no impact on population growth यार सटीक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर बी इंडिया हैज अचीव्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी एज पर NFHS5 हमर NFHS5 द्वारा हमर इंडिया अचीव सफलता पाई अछि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर देखंतु निम्नलिखित मानक मध्यरो हमर प्राइमरी सेक्टर केउटा गोटे हमर पार्ट नुहे ए देखंतु फिशिंग हो हमर प्राइमरी सेक्टर गोटे पार्ट अटे एंड बी देखंतु फॉरेस्ट्री आल्सो एंड सी देखंतु डेयरी फार्मिंग मध्ये हमर पार्ट ऑफ द हमर प्राइमरी सेक्टर अटे बट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर ठीक अछि यार सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज देखंतु हमर सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज ठीक है हमर जो सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज अछि से हमर सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज रिलेटेड कोनटा करेक्ट अटे ए देखंतु माइनिंग एंड एग्रीकल्चर एंड डेयरी बी देखंतु कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग सी रिटेल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन डी देखंतु बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज देखंतु यार सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमर सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज कहले कंस्ट्रक्शन आसुची मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग मन रखिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल कैपिटल हम देखंतु फिजिकल कैपिटल कहले कोन जहा मैन मेड अछि ठीक अछि जहा मानव कृत अटे देखंतु हमर फिजिकल कैपिटल नुहे कहै ठीक अछि ए देखंतु टूल्स एंड मशीनरी बी फैक्ट्री एंड बिल्डिंग सी एजुकेशन एंड स्किल्स ऑफ वर्कर्स डी कंप्यूटर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन देखंतु हमर टूल्स एंड मशीनरी होची फिजिकल कैपिटल अटे एंड बी होची फैक्ट्री एंड बिल्डिंग मध्ये गोटे फिजिकल कैपिटल अटे एंड डी देखो कंप्यूटर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ये भी मध्ये हमरा गोटे फिजिकल कैपिटल अटे बट हमर एजुकेशन एंड स्किल्स ऑफ वर्कर्स इज नॉट ए फिजिकल कैपिटल मन रखियो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल कैपिटल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच टाइप इन व्हिच टू टाइप्स देखो हमर जो फिजिकल कैपिटल को हमर कैटेगराइज्ड कराइछि एहा होछि दुई टाइप्स ठीक अछि सेगुडी को कोन ए देखंतु वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल बी देखंतु टैंजिबल एंड इंटैंजिबल कैपिटल सी देखंतु रियल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल डी ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल कैपिटल एरा सटीक आंसर होछि देखंतु ऑप्शन नंबर ए देखंतु हमर फिजिकल कैपिटल कहले कोन वर्किंग कैपिटल अटे एंड फिक्स्ड हमर देखंतु फिक्स्ड कैपिटल कहले कोन जेपरि हमर मशीनरी हला टूल्स हला ठीक है एगुड़ी फिक्स्ड थाए कि डेली गुड़ी यूज होता है से गुड़ी हूँ हमारा फिक्स्ड कैपिटल जेपरी मशीनरी टूल्स ठीक है बट वर्किंग कैपिटल कहले के गुड़ी कटे वर्किंग कैपिटल कहले हमर जो प्रोडक्शन है ठीक है एगुड़ी हूँ हमारा वर्किंग कैपिटल अटे नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारा फिक्स्ड कैपिटल लो उदाहरण कोन अटे ए देखंतो रॉ कॉटन इन ए टेक्सटाइल मिल सॉरी बी देखंतो मशीन यूज्ड इन ए शुगर फैक्ट्री and C देखो cash held by a trader D diesel fuel used in a generator हमर फिक्स्ड कैपिटल कहले कोन होते यार सटीक आंसर है देखंतु ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट मशीन यूज्ड इन ए शुगर फैक्ट्री ठीक अछि एगुडी होची हमरा फिक्स्ड कैपिटल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल देखंतु वर्किंग कैपिटल कहले कोन होते ए देखंतु ट्रैक्टर यूजिंग इन फार्मिंग बी स्टोरेज वेयर हाउस एंड सी देखंतु फर्टिलाइजर एंड सीड्स used in cultivation D देखंतु land and used for growing crops हमरा वर्किंग कैपिटल कहले मन रखिबे तार सटीक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट ठीक अछि ट्रैक्टर यूज्ड इन फार्मिंग देखो तो आमर वर्किंग कैपिटल कहले
बी देखो स्टोरेज एंड वेयरहाउस, सी होची फर्टिलाइजर एंड सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन एंड डी होची लैंड एंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। देखो 7 नंबर क्वेश्चन रो सठिक आंसर होची देखो हमरो 7 नंबर क्वेश्चन रो सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर देखो सी होची करेक्ट। ठीक अछि 7 नंबर क्वेश्चन रो सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी फर्टिलाइजर एंड सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन, या होची हमर वर्किंग कैपिटल। ठीक अछि मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is a physical capital considered important for economic growth? कहीं कि हमर फिजिकल कैपिटल को सबुठार गुरुत्वपूर्ण अटे हमर अर्थनीतिर वृद्धि रे कहीं कि विवेचना करा जाय। ए देखो इट इज फ्रीली अवेलेबल इन नेचर एंड बी इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी, सी देखो इट रिप्लेस द नीड फॉर ह्यूमन लेबर एंड डी देखो इट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। देखो हमर इकोनॉमिक ग्रोथ कहले कोन हमर फिजिकल कैपिटल किपरि भाव रे इकोनॉमिक ग्रोथ रे हमर हेल्प करू। ठीक अछि यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर हमर बी होची करेक्ट, इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक अछि सेते पय फिजिकल कैपिटल हमर बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई which of the following best defines intangible investment asset? हमर intangible investment asset कहले कोन अटे? ए देखंतु asset that are visible and movable, B asset without a physical form but with economic value, C देखो asset that depreciate physically over a time, D देखो asset only used in agriculture and construction। देखो हमर intangible investment asset कहले asset that are visible and movable and B देखो asset without a physical form and but with economic value, एरा होची ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट। ठीक अछि इंटेंजिबल कहले अदृश्य, ठीक अछि एसेट विदाउट फिजिकल फॉर्म बट विथ इकोनॉमिक वैल्यू, जेपरि हमर एजुकेशन। ठीक अछि दिस इज ए इंटेंजिबल बट इट इज ए प्रोवाइडिंग फॉर इकोनॉमिक। द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट एसेट। हमर देखंतु इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट एसेट रो हमर निम्नलिखित मानक मध्यरु कोनसी गोटे यार उदाहरण नुहे। ए देखो पेटेंट एंड बी देखो ट्रेडमार्क एंड सी मशीनरी, डी ब्रांड रेपुटेशन। देखो हमर नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट एसेट। इंटेंजिबल कहले कोन अटे मन रखिए हमर मशीनरी होची हमर इट इज नॉट ए इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट बट पेटेंट ट्रेडमार्क ब्रांड रेपुटेशन एगुडी के होची हमर इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट एसेट अटे। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन why are intangible asset increasingly important अटे? देखंतु हमर स्टार्टअप और इनोवेशन रे काहे कि हमर इंटेंजिबल एसेट गुडी को बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। ए देखंतु दे हैव नो वैल्यू हेंस रिक्वायर नो मेंटेनेंस, बी दे कैन बी इजीली borrowed from banks, C they play a key role in enhancing competitiveness and market value, D they replace all forms of physical capital। कोन पाई देखंतु हमर इंटेंजिबल एसेट गुडी को बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे इन द सेक्टर ऑफ लाइक स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन। यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर सी दे प्ले की रोल इन एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड मार्केट वैल्यू। मन रखियो ठीक अछि देखंतु 11 नंबर रो सठिक आंसर होची देखंतु सॉरी 11 नंबर हमर सठिक आंसर होची देखंतु यार सठिक आंसर देखंतु सी होची करेक्ट। ठीक अछि यार सी होची करेक्ट। ठीक अछि 11 नंबर रो हमर सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी। ठीक अछि दे प्ले ए की रोल इन एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution in India is primarily responsible for registering and protecting intangible asset like patent and trademarks? देखो हमरा क्यों इंस्टीट्यूशन हमर प्राइमरीली रेस्पोंसिबल दायी अटे for registering and protecting intangible asset like patent and trademark। यह होची हमर intangible asset गुडी को मन रखते patent and trademark। देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया। मन रखते ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following intangible assets can be protected through copyright law in India? देखो हमर क्यों intangible asset को हमर देखो तो प्रोटेक्टेड सुरक्षा दिया जायछि थ्रू कॉपीराइट लॉ इन इंडिया। ए देखो तो साइंटिफिक इन्वेंशन, द ब्रांड नेम, सी आर्टिस्टिक वर्क, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्टिस्टिक वर्क। मन रखिए ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best represent the real sector of the economy? हमर रियल सेक्टर
रियल सेक्टर इकोनॉमी कहले कोन अटे ए देखंतु एक्टिविटीज related to monetary and fiscal policies, the activities involved in the production and the distribution of goods and services, see only agriculture and mining, the trading and stocks and bonds. देखो तो हमारे रियल सेक्टर इकोनॉमी कहले यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड in the production and the distribution of goods and services. Our activities involved in the production and the distribution of goods and services. यह होचा हमार रियल सेक्टर इकोनॉमी मन रखबे. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो 14 नंबर सठिक आंसर होची देखो त हमर 14 नंबर बी होची करेक्ट. ठीक अछि मन रखते 14 नंबर सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following sector fall under the real sector of the Indian economy. या करेक्ट पचारि अछि अबाउट हमर रियल सेक्टर इकोनॉमी. ये देखो तो एग्रीकल्चर, बी बैंकिंग, सी मैन्युफैक्चरिंग, डी कंस्ट्रक्शन. हमर रियल सेक्टर इकोनॉमी कहले मन रखते एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, नॉट बैंकिंग हमर रियल सेक्टर आसु नाही. ठीक अछि. या सठिक आंसर होय देखो ऑप्शन नंबर सी 1 3 एंड 4 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following indicator is primarily used to measure performance of the real sector. Which of the following indicator is primarily used to measure performance of the real sector. हमर देखंतु हमर निम्नलिखित मानक मधुर क्यों इंडिकेटर क्यों सूचक जे कि प्राथमिक भाव में हमर रियल सेक्टर परफॉर्मेंस को मेजर करिया पई याको व्यवहार करा जाय. ए देखंतु कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बी रेपो रेट, सी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सी देखो डी देखंतु कैश रिजर्व रेशियो. यार सटीक आंसर होय ऑप्शन नंबर सी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statements about the real sector is correct अटे. रियल सेक्टर रिगार्डिंग क्यों स्टेटमेंट हमरा करेक्ट अटे. ए देखंतु इट कंसिस्ट ओनली गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, बी इट एक्सक्लूड्स सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज, सी इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, डी देखंतु इट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर. यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर हमर सी होची करेक्ट. ठीक है. इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट मन रखियो. ठीक अछि. डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी. देखंतु 17 नंबर क्वेश्चन रो सठिक आंसर होची सी. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सपोर्टिंग रियल सेक्टर एक्टिविटीज. हमर देखंतु रियल सेक्टर एक्टिविटीज ठीक अछि. हमर व्हाट इज द प्राइमरी गोल होते हमर रियल सेक्टर एक्टिविटीज रो प्राथमिक लक्ष्य कौन अटे इन द इकोनॉमिक पॉलिसी. ए देखंतु टू बूस्ट स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, बी टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, सी टू इंक्रीज प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, डी देखंतु टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट. यार सठिक आंसर होय ऑप्शन नंबर सी टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम मन रखते. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following best defines economic growth. हमर इकोनॉमिक ग्रोथ कहले कोन होटे. ए देखंतु increase in the money supply in the economy, b increase in the country's real output of goods and services over time, c increase in population and consumption, d rise in stock market indices. यार सठिक आंसर होय देखंतु ऑप्शन नंबर हमर देखंतु सी होची करेक्ट. इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड कंजम्पशन. हमर देखंतु इकोनॉमिक ग्रोथ कहले इंक्रीज इन कंट्रीज रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम. ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट. देखंतु 19 नंबर सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मन रखिबे. इकोनॉमिक ग्रोथ कहले इंक्रीज इन कंट्रीज रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम. गोटे देशर ठीक अछि गोटे देशर तार सर्विस गुड एंड सर्विस बा उत्पादन आमदानी रे ठीक अछि जदी ग्रोथ हुए ओवर टाइम बा किछि समय पई थाले हे आकवा इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक अछि. हमर 18 नंबर देखंतु सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखंतु हमर इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली मेजर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर. हमर तो इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक अछि. ए जो इकोनॉमिक ग्रोथ को हमर क्यों इंडिकेटर द्वारा याको मेजर करा जाय. ए देखंतु ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डी फिस्कल डेफिसिट. यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर हमरो देखंतु सी होची करेक्ट. रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी द्वारा हमर गोटे देशर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करा जाय. ठीक अछि. यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट. याथला किछि हमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर इकोनॉमिक जीडीपी एंड बेसिस
आपण माने जदि चाहउछन एई परि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करबा को ताले डेफिनेटली आपण माने एई चैनल को फॉलो करि परिबे ता सहित आपण माने डेफिनेटली आपण मानकर कॉन्फिडेंस गेन हबो एंड आपण माने डेली मध्ये क्वेश्चन आंसर